Hello everyone. Sanskrit is regarded as the ancient language in Hinduism, where it was used as a means of communication and dialogues by the Hindu gods and then by the Indo-Aryans. Sanskrit is also widely used in Jainism, Buddhism, and Sikhism. The Sanskrit language was termed as Devani, and it is still widely used today in the reading of sacred texts and hymns. Now I am going to speak the names of 7 fruits, 7 flowers, 7 animals, and 7 birds in Sanskrit. Here it goes. फलों के नाम आम, आम्रम, अनार, दाडिमम, अंगूर, द्राक्षा, सेब, सेवम, केला, कदलीफलम, नारियल, नारिकेलम, नाशपाती, अमृतफलम. अब फूलों के नाम कमल, कमलम, गुलाब, पाटलम, गेंदा, सेवंतिका, गुड़हल, चित्रपुष्पी, जीनिया, विद्यापुष्पम, सूरजमुखी, सूर्यवृतम, चमेली, नवमल्लिका. अब जानवरों के नाम शेर, सिंह, हाथी, गजर, हिरण, मृग, घोड़ा, अश्व, गाय, धेनु, भैंस, महिष, खरगोश, शिशुका. अब पक्षियों के नाम मोर, मयूर, हंस, मराला, बतख, वर्तक, कबूतर, कपोत, कोयल, कोकिला, तोता, शुक, चील, शैना,